then license is not given to us by government free of cost. Government charges us license fees. For example, if we purchase some property, और वो प्रॉपर्टी जब हम अपने नाम पे रजिस्टर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस अस रजिस्ट्रेशन फीस. Government will charge us registration fees. Go and obtain passport from the government. Go and obtain passport from the government. Passport government will not give you free of cost. For obtaining passport, we need to provide passport fees to the government. So these are all examples of fees. Second one is special assessments, or we can say special charges. Government applies some special charges to us, but ये सबको applied नहीं होता है. These are not applied to all. These are applied only to those people who are using those facilities. जैसे for example, if we go to highways, आप देखो हाईवे पे गवर्नमेंट चार्जेस टोल. Is that toll charged to each and every person? No. The toll is charged only to those persons who are utilizing that road. जो रोड हम यूज करेंगे उसके ऊपर हमको टोल लगाना पड़ेगा. अभी मुंबई पुणे का एक्सप्रेस हाईवे है, जो लोग यूज करते हैं वो लोग को ही उसका टोल लगेगा, सबको अप्लाइड नहीं रहेगा. ओके. Third one, fines, and fourth one, penalties. Fine and penalty, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है. Many people misinterpret them as one and the same. They misinterpret as one and the same. उनके हिसाब से दोनों सेम है, बट आई से नो, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है. फाइन अलग है, पेनल्टी अलग है. फाइन और पेनल्टी दोनों अलग अलग है. फाइन इज अप्लाइड फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स. मतलब आप कुछ रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन लगेगा. अभी जैसे मास्क पहने बगैर आप निकलोगे, when you go out without mask, you will be required to pay fine. रूल बनाया है मुंबई में, 500 rupees fine for that. ओके. तो कैसा है that fine will be applicable if you don't follow the rule. Fine will be applicable if you don't follow the rule. Only then the fine is applicable. And penalties are applicable if we don't follow the deadline. हम जब डेडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, if we don't follow the deadline, penalties are applied. If we don't follow the deadline, we will have to pay penalty. अभी जैसे लाइट बिल पे करने का डेट रहता है, सपोज 21st July was the last date. तो आप उसके बाद में आपने बिल पे नहीं किया, it does not mean that
दे विल चार्ज यू फाइन, दे विल चार्ज यू पेनल्टी, 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं आपके पास से। देखा है कभी, ऑब्जर्व किया है? देन दैट इज पेनल्टी। टाइम पे नहीं करते हैं तो पेनल्टी, एंड रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फाइन। टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट मतलब पेमेंट नहीं, कुछ डेडलाइंस होती है, वो डेडलाइन अगर हम फॉलो नहीं करते देन वी आर रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी, एंड फाइन विल बी एप्लीकेबल फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स। आर यू गेटिंग दैट कंसेप्ट? समझा सबको? फाइन, फाइन एंड पेनल्टी दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, देन another type of non-tax revenue to the government is gifts and donations. Gifts and donations. See, that is another important part, that there will be gifts and donation received by the government. आज जैसे we take example that in this COVID-19 situation, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मूवमेंट चालू किया है, पीएम केयर फंड। PM Care Fund. You can observe that many people have donated huge amount of money into that fund. They have donated huge amount of money into that fund, and that is example of donation. गवर्नमेंट को कुछ लोग गिफ्ट भी देते हैं। Then sixth one, very important one, that is called as profits of PSUs. Profits of PSUs, that is public sector utilities. Profits of public sector utilities. What are public sector utilities? What are public sector utilities? I don't want example, I want meaning. Very good. They are the utilities which are owned and managed by the government. The utilities which are owned, managed and controlled by the government are called public sector utilities. तो आप ऑब्जर्व करो, as the ownership is with the government, as the ownership is with the government, उसमें से उनको जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें से उनको जो भी प्रॉफिट होगा, वो लोग क्या करेंगे? उनका इनकम में ऐड करेंगे, उनका इनकम में ऐड करेंगे।
So these are non-tax revenue of the government, non-tax revenue of the government. Any doubt into that? Any doubt? पेनल्टी मतलब कैसा है कि जब हम लोग कुछ टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लगता है दैट इज कॉल्ड पेनल्टी. उसके ऊपर जो हमको एक्स्ट्रा लगेगा दैट इज कॉल्ड पेनल्टी. ओके, दैट विल बी कॉल्ड पेनल्टी. स्पेशल असेसमेंट का बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज टोल टैक्स, या तो फिर आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को विजिट करो तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में विजिट आपको फ्री में नहीं होता है. फॉर दैट गवर्नमेंट चार्जेस यू समथिंग, and that is called special assessment. Is that okay? अभी पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. now let us describe one very important thing. देखो, what happens in real life? In real life, what is observed that government expenses are always greater than government revenues. Government expenses are always greater than government revenues. So there is shortage of funds to the government, and that is called accounting terms में या economic terms में हम ऐसे shortage को क्या बोलते हैं? We call it as deficits. We call it as deficits. तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन डेफिसिट्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट टेक्स अप, इन डेफिसिट्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट टेक्स लोन्स. Government obtains loans, and the loans taken up by the government are called as public debts. Loan taken up by the government are called as public debt. So today I'm going to describe public debts. It refers to the loans obtained by the government. Loans obtained by the government is called public debts.
Now, public debts are basically of two types. ये समझना बहुत जरूरी है. Public debts are basically of two types. One is internal debts and other is external debt. Internal debts and external debts. Now, whenever government takes loan, whenever government takes loan within the country, then such loans are taken up by the government. Such loans taken up by the government shall be called as internal debt. Such loans shall be called as internal debt. Okay. And when government takes loan outside the boundaries of the country, when the government will take loan from outside the boundaries of the country, then it shall be called as external debt. Internal debt मैंने बताया within the country, and external debt मैंने बताया outside the country से जो भी borrowings होगा, they are external debt. तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पार्ट कंप्लीट हो गया. अभी उसके अंदर एक ही पार्ट बचा हुआ है, बजट एंड टाइप्स ऑफ बजट. बजट एंड टाइप्स ऑफ बजट, दैट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर सैटरडेज लेक्चर. That concept we will discuss in our Saturday's lecture. तो आज जो भी हमने डिस्क्राइब किया उसके अंदर आपको कुछ भी डाउट है तो पूछो. स्पेशल लेवी आर सम स्पेशल टैक्सेस अप्लाइड. अभी जैसे इस लॉकडाउन में आप देखो बीच में दिल्ली में दे स्टार्टेड सेलिंग लिकर. नाउ व्हेन दे वर सेलिंग लिकर इन दिल्ली, उस वक्त में वो लोग ने क्या किया था, दे स्टार्टेड चार्जिंग सम स्पेशल टैक्स ऑन दैट लीकर. Some special tax was charged on that liquor so that the money can be recovered from the people. So that was special. Borrowings बोल दिया मतलब loans taken, वो मैंने separately बता दिया. Borrowings मतलब loan, वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया है. ओके, अदर डाउट? Okay, so nobody is having further doubts. Let me conclude with the session today.